मध्य गुजरात के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसजी के क्लास 4 वर्ग के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। मध्य गुजरात की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल एसएसजी वडोदरा में है। यहाँ क्लास 4 के कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। अस्पताल में कार्यरत 560 कर्मचारियों ने हड़ताल कर समय से वेतन नहीं दिए जाने का विरोध किया। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट बेस इन कर्मचारियों को वेतन चुकाने में राजेश एंटरप्राइज एजेंसी विलंब कर रही है, जिसके चलते इन गरीब कर्मचारियों को घर के गुजर बसर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं एसएसजी में कैंपस में जॉब करता हूँ। बस हमारी इतनी मांग है कि हमारी सैलरी टाइम टू टाइम होनी चाहिए। पिछले महीने 22 तारीख को सैलरी हुई थी, आज तारीख 15 हुई, पर अभी तक सैलरी हुई नहीं। इन लोगों ने बोला था कि 1 से 10 तारीख के अंदर सैलरी हो जाएगी, पर जब से ये कॉन्ट्रैक्ट आया तब से तारीख पे सैलरी हुई ही नहीं है। कोई फिक्स तारीख होती ही नहीं। ये लोग सब बैठे हैं इधर हड़ताल करके, जब तक सैलरी नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं करेगा और इधर ही बैठे रहेंगे। अगले महीने को 23 तारीख को पगार हुआ था, अभी तक पगार को नक्की है, वही 15 तारीख हो गई। अभी એટલી જ માંગણી છે સાહેબ કે અમને 1 થી 10 માં પગાર આપો। ગયા મહિને 22 થી 23 તારીખ થઈ ગઈ, અમારું પગાર થયું નહીં। આ મહિને 15 તારીખ થઈ ગઈ, કોઈ પગાર અમારું થયું નહીં। અમારે ભાડા ભરવાના હપ્તા બાઉન્સ થાય સાહેબ, 700 રૂપિયા પેનલ્ટી ભરીએ છીએ અમે। સાહેબ કોઈ તારીખ નક્કી પગારની નહીં। અમે કેટલા વર્ષોથી આવા હેરાન થઈ રહ્યા છે, કોઈ અધિકારી જવાબ આપવા તૈયાર નથી કે તમારું પગાર કાર્ય થશે। અમને ખાલી એટલી જ માંગે 1 થી 10 માં અમારું પગાર થઈ જવું જોઈએ સાહેબ। અમારું 70-80 હજાર પગાર નહીં સાહેબ કે 2 મહિના ચલવી લઈએ। 12-13 હજાર પગારમાં અમારું મહિનાનું ગુજરાન નહીં થતું, તોય અમે નોકરીઓ કરી। હા, બિલ પાસ નહીં થતું, આ નહીં થતું સાહેબ। અમે શું જાણીએ, અમને તમે પગાર અમે આટલી ઘેડા જેવી બકરા જેવી મહેનતો કરીએ સાહેબ। અહીં ગાડી આટલી મહેનત કરી કે અમારી કોઈ મહેનત કોઈ એવું નહીં કે સાહેબ ને પગાર આપી દે અમે તારે ચાલુમાં જ બધું થાય, તોય સાહેબ અમારું પગાર હજુ થતું નથી। અમને ખાલી એટલું જ છે કે 1 થી 10 માં સાહેબ પગાર હાલ દો તો અમે ખુશી ખુશી કામ કરવા રાજી છે। બાકી અમારું પગાર નહીં થાય તો અમે અહીંથી હટવાનું નહીં થાય, અમે કામ કરીએ નહીં સાહેબ। પગાર માટે અમે હડતાલ પાડી છે। અમારો પગાર ટાઈમસર થતો નથી। મહિનો પૂરો થવા આવે ત્યારે પગાર આપે છે, તો અમારે શું કરવાનું? ખાવાનો ખર્ચો, ઘરના ભાડા કેવી રીતે અમારે કાઢવાના? તો અમે આજે હડતાલ પાડી છે। વોર્ડમાં કામ કરવા ગયા નથી। જ્યાં સુધી પગાર નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે વોર્ડમાં જવાના નથી। અમારી પાસે દોડી દોડીને કામ કરાવે છે, બરાબર। જ્યારે અમારે ઇન્ડિયન આવે છે ત્યારે અમે દોડી દોડીને ખાવાના બી ઠેકાણા પડતા નથી અને અમે ટાઈમસર કામ કરીને અમે આપીએ છીએ, છતાં બી અમારા પગાર માટે અમને આટલા હેરાનગતિ કરે છે। તો અમારે હવે હડતાલ પાડી છે, જ્યાં સુધી પગાર નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે વોર્ડમાં જવાના નથી। એ ગયા મહિને અમને 22 તારીખે પગાર આપ્યો અને આ મહિનામાં તો હજુ પગારની કોઈ વાત જ નથી થતી। એટલે 22-23 તારીખ સુધીમાં પગાર થાય તો અમારે ઊંચી પાછીના પૈસા લાવીને અમારે ઘર ખર્ચો કાઢવો પડે છે। તો અમારે દર મહિને આના જ પોઝિશન હોય છે। અમે 3-4 વર્ષથી કામ કરીએ છીએ। एसएसजी अस्पताल के सैकड़ों कर्मचारियों ने हड़ताल कर अपना आक्रोश जताया, जिसके चलते अस्पताल में स्वच्छता की कार्यवाही पर गंभीर असर पड़ा है। कई नहीं, અત્યારે તો સમજાવીને 2 દિવસમાં પગાર થશે એની સાહેબ જોડે અમે જોડે વાત કરી છે। 2 દિવસમાં થઈ જશે। એ લોકોની જે મુદ્દો હતો એ સાચો છે। ના, પગાર એવું નથી હોતું, હાજરી ઇન્ચાર્જો દ્વારા જ પૂરવામાં આવે છે। એ હાજરી પ્રમાણે અધિકારીની સાઇન હોય પછી જ સેલરી કરવામાં આવે છે। એસ્ક્રો એકાઉન્ટ દ્વારા પગાર થાય છે। અમારા દ્વારા જે પીએફ ને ઈએસઆઈ ના નાણાં હોય, પણ એવું નિયમ જ નથી કે કરંટ એકાઉન્ટ થી પગાર થઈ શકે। એસ્ક્રો એકાઉન્ટ દ્વારા જ પગાર કરવાની સૂચના પહેલાથી જમનાભાઈ થી ટેન્ડર દ્વારા થયું ત્યારે મળેલી છે। તો કરંટ એકાઉન્ટમાંથી જે પીએફ ઈએસઆઈ ના નાણાં ભરવાના હોય છે એ ભરી દીધેલા છે। એ લોકોની બિલ પાસ નથી થયા, સેલરી નથી થઈ, છતાં પણ એ લોકોના પીએફ ઈએસઆઈ ના નાણાં ભરી દીધેલા છે। એ લોકો એવું કહે છે, ઘર વગીને તમે એવું કહો છો કે બિલના ઇસ્યુ છે, તમે અધિકારીને પૂછી શકો છો કે કઈ જગ્યાએ અટકાયેલું છે બિલ। કઈ વાંધો નહીં, નોટિસ આપશે તો અમે જવાબ દઈ દેશું સાહેબ। ના, ભૂલ નથી, બિલ પાસ થાય એ પ્રમાણે બધી પ્રોસેસ ચાલે છે। ના, એટલે એ લોકોએ ટકોર દીધી વાત સાચી છે કે 1 થી 10 માં પગાર કરવાનો। અમે આગળથી ध्यान રાખશું કે 1 થી 10 માં તારીખમાં પગાર થાય અને કર્મચારી હેરાન ના થાય। ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓ આજે એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે અમારી ઓફિસમાં આવેલા અને રજૂઆત કરેલી છે કે અમને પગાર નથી મળ્યો। તો આ બાબતે હું એટલું જ કહેવા માંગીશ કે આ જે બી કંઈ છે એ થોડી વહીવટી પ્રક્રિયામાં વિલંબના કારણે થયેલું છે। અમે અમારી તરફથી પૂરતી કોશિશ કરીએ છીએ કે વર્ગ 4 કર્મચારીઓને પહેલા પગાર મળી જાય।
આમાં વહીવટી કારણોસર જ ઘણીવાર લેટ થઈ જતો હોય છે. બાકી બધી પૂરતી કોશિશ હોય છે કે એજન્સી દ્વારા એ લોકોને જલ્દી પગાર મળી જાય. એજન્સીની જવાબદારી બને છે કે એને પગાર, કર્મચારીઓને પગાર સમયસર કરી દેવા જોઈએ. પણ આ બાબતે જે બી વચ્ચે કઈ ખામી કે જે બી હશે એને નિવારવા અમે સોર્ટ આઉટ કરવા પ્રયત્નશીલ છીએ. એની જવાબદારીનું એ લોકોએ ધ્યાન તો રાખવું જ જોઈએ. જ્યારે પણ આવા ઇસ્યુ બને છે ત્યારે અમે એજન્સીને સૌથી પહેલા કોન્ટેક્ટ કરીએ છીએ. આ વખતે પણ એ લોકોએ, અમે તો અમારા તરફથી જે બી કાર્યવાહી કરવાની હશે એ અમે ચોક્કસ કરીશું અને એજન્સીને પણ તાકીદ કરવામાં આવી છે કે 1-2 દિવસમાં આનો નિવેડો લાવી પગાર કર્મચારીઓને કરી દે. અમારા તરફથી જે બી કાર્યવાહી કરવાની થાય છે એ અમારા સત્તાવાળાઓ અમારા તરફથી થતી જ હોય છે. એનું જે બી હશે એ અમારા તરફથી જે બી કાર્યવાही કરવાની હશે અમે કરીશું. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी रखा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों ने आज गुरुवार सुबह 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इसमें एक टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल है। इसके अलावा आमिर, नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट को भी ढेर कर दिया गया है। ये तीनों पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल थे। हालांकि अधिकारियों की तरफ से आतंकियों की मौत की पुष्टि होना बाकी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले शोपियां जिले के केलर में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। बुधवार को केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। गुजरात में बेमौसम बरसात से कई गांव और शहरों में किसानों की चिंता बढ़ गई है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में हाल ही में हुए बेमौसम बारिश ने तबाही मचा दी है। इस आपदा से परेशान होकर किसानों और किसान नेताओं ने कोडीनार मामलतदार को आवेदन पत्र सौंपा है और सरकार से मुआवजे की मांग की है। જે આવેદનનો હેતુ છે અમારો, જે અત્યારે છેલ્લા સતત 6 થી 7 દિવસથી સતત કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. કમોસમી વરસાદે માઝા મૂકી છે. ખેડૂતોને કઠોળ પાક, બાગાયતી પાકમાં અનેક પ્રકારનું નુકસાન છે, અનકેણું નુકસાન થયું છે. તે બાબતે પણ સહાય, તાત્કાલિક ધોરણે સહાય ચૂકવે એ બાબતે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. વરસાદ છે એ છેલ્લા 6 થી 7 દિવસથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો હતો. આ કાલથી જ પૂરો વરસાદ ખાઈ ગયો છે અને 4 થી 5 ઇંચ વરસાદ થયો છે. અને ખેડૂતોને જે કઠોળ પાકમાં છે, મગ, અડદ છે, તલ છે, બાજરી છે, એવા જે રાગજાત છે એવા કઠોળને મોટું નુકસાન થયું છે. છેલ્લા 5-6 દિવસથી કમોસમી વરસાદ 5 થી 6 ઇંચની આજુબાજુ પડ્યો છે. એને કારણે કઠોળ વર્ગ અને અન્ય બીજા પાકોની અંદર અને બાગાયતી પાકોમાં મોટું નુકસાન થયું છે. તો આ બાબતે સરકારશ્રી તરફથી ખેડૂતોને એક પ્રોત્સાહન કે સહાય નહીં આપવામાં આવે તો આવતી સાલ કઠોળ જેવા પાકો અને એને વાવતા બંધ થઈ જશે. એટલું જ નહીં, પણ બાગાયતી પાકમાં વાર્ષિક એક જ વખત આંબાનો પાક આવે છે. એમાં આવી નુકસાન થશે તો એક તો મોર ખરી ગયેલો શરૂઆતમાં, અને એમાંય આ પાછો કમોસમી વરસાદને કારણે જે થોડો ઘણો પાક થયો છે એ પણ નાશ પામશે. તો ખેડૂતો આંબાની ખેતી પણ કાઢતા જશે. અંદાજે ખેડૂતના પ્રમાણમાં, બાગાયતીના પ્રમાણમાં એની જે કઈ એનો પાક છે એમાં 50% તો એ નુકસાનીમાં ગયો છે. આવેદન તો સરકાર સુધી આ અવાજ જાય અને સરકારને ધ્યાને આ વાત આવે તો સરકાર એની તપાસ એના માધ્યમથી ખેતીવાડી ખાતા મારફતે એની તપાસ થાય અને એ અહેવાલમાં કંઈક વિચારી અને કમસે કમ એને થોડી ઘણી પણ સહાય હશે તો આ ખેડૂત જીવતો રહેશે. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund.
Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ
अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के सूरत में ब्रिज निर्माण में देरी पर मेयर ने सख्त एक्शन लिया है। सूरत के कतारगाम इलाके में बन रहे रतनमाला फ्लाईओवर के काम में देरी को लेकर अब नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। सूरत के मेयर दक्षेश मवानी ने आज अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइट विजिट की और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बता दें कि ये फ्लाईओवर गजेरा सर्कल के पास बन रहा है और इसका 33% काम अभी भी अधूरा है, जबकि 3 साल में केवल 67% ही कार्य पूरा हो पाया है, जिससे नागरिकों को लगातार ट्रैफिक और सुविधा की समस्या झेलनी पड़ रही है। मेयर ने ठेकेदार को साफ शब्दों में दिसंबर तक काम पूरा करने का अल्टिमेटम दे दिया है। तो लोकोમાં એક હોવાપો તો આ બ્રિજ કેમ લેટ થઈ છે, આપની ચેનલના માધ્યમથી હું જાણ કરું છું કે એ બ્રિજની નીચે ઘણી યુટિલિટી આવતી હતી, એના હિસાબે 10 મહિના યુટિલિટી ચેન્જ કર્યો, સુરત મહાનગરમાં મોટો ભાર પડતો હતો ને યુટિલિટી ચેન્જ કરવા હિસાબે બ્રિજની ડિઝાઇન પણ ચેન્જ કરવી પડે એમ હતી, એટલે મેં યુટિલિટી ચેન્જ નહીં કરી ને ડિઝાઇન ચેન્જ કરી, એટલે મહાનગરપાલિકામાં ભારણ પણ ન પડ્યું। 10 મહિના જેટલો લેટ ચાલુ રહ્યો હતો, પણ ડિસેમ્બર સુધીમાં ચોક્કસ અમે લક્ષ્યાંક આપ્યો છે એટલે ડિસેમ્બર સુધીમાં હવે 67% જેટલી કામગીરી પૂરી થઈ છે। એટલે હવે જે કામગીરી બાકી છે તે ચોમાસામાં પણ કામગીરી થઈ શકે એવું છે। ગટર અને સ્લેબનું કામ બાકી છે, એટલે ડિસેમ્બર સુધીમાં આ બ્રિજ સુરતને समर्पित हमें कर दें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई थी
और अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। गुजरात कच्छ के भुज में ऑपरेशन सिंदूर के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देश के सम्मान और एकता का संदेश गूंज उठा। इस रैली में बीएसएफ के जवानों के साथ साथ सांसद, विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। रैली में पुलिस बल, होमगार्ड्स और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी भाग लिया। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों ने ये संदेश दिया कि देश की रक्षा और सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। देशभक्तिનો માહોલ બન્યો છે। ઠેર ઠેર જગ્યાએ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે। કચ્છ જિલ્લાની અંદર પણ ભુજ મધ્યે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। દેશના બહાદુર જવાનોએ જે પરાક્રમ કર્યું છે અને પાકિસ્તાનમાં ઘરમાં ઘૂસી કરીને જે આતંકવાદીઓનો ખાત્મો કર્યો છે અને જે આપણા સૌનું ગૌરવ એવા જવાનોના માનમાં અને સન્માનમાં આખા દેશમાં દેશભક્તિ અને દાદ દરેક ભારતવાસીઓના હૃદયમાં બેસી રહે, જેના ભાગરૂપે આજે અલગ અલગ જગ્યાએ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। જેના ભાગરૂપે આજે કચ્છ જિલ્લાની અંદર પણ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને અનેક લોકો, અનેક નાગરિકોની ઉપસ્થિતિ રહી હતી। गुजरात के वडोदरा में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में तांदलजा से एक और मामला उजागर हुआ है। वडोदरा के तांदलजा इलाके की नूरानी सोसाइटी और आसपास की सोसाइटियों में पिछले 3 महीनों से गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। बार बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। इस मुद्दे को लेकर महिलाओं ने वडोदरा की वड़ीवाड़ी नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस समस्या को लेकर आज महिला मोर्चा की ओर से वड़ीवाड़ी नगर निगम कार्यालय के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने पानी की बोतलों में गंदा पानी लाकर टेबल पर रखा और प्रतीकात्मक रूप से मछलियों वाली बोतल तोड़ी, जिससे ये दिखाया गया कि इस पानी में मछलियां भी मर सकती हैं। तांदलिया नूरानी पार्क से आए हुए हम आज 3-4 महीने से, हम पहले तो 3 साल पहले हम आए थे, जब भी यही समस्या थी कि गंदा पानी आता है। और अभी फिलहाल 3 महीने से हमको नूरानी पार्क में पानी का सूकच नहीं है। 3 महीने होते नहीं, फिलहाल हमारे यहाँ 2-4 दिन चोखा पानी आता है और फिलहाल 3 महीने पानी हमारे यहाँ गंदा आता है। हमारा इतना बड़ा रमजान का महीना था, जब भी हमने ये गंदा पानी इस्तेमाल किया और बच्चे भी इस पे ही नहाते थे। ये बोतल यहाँ रख के जाती, उसको ऐसा बोलना कि या जो बेटा हो अधिकारी, तो उसको बोला तेरे बच्चे को नीला और पीला और मुंह खुद धो के देख के तू धो सकता है, तो हमको बोल के तुम धो सकते हो। यही विरोध है। अगर आप ये इस बार अगर पानी हमारे यहाँ क्लियर नहीं है तो हम कोई वेरा सोसाइटी में से भरेंगे नहीं। कोई भी अधिकारी नहीं मिला, एक भी अधिकारी नहीं मिला। क्या मालूम उन्हें पता चल गया था कि हम लोग आने के, इसलिए कोई भी नहीं, सब ताले मार के चले गए। तो ये किस तरीके से आप कैमरा फिरा के देख लो कि कोई भी अधिकारी नहीं है देखने वाला कि हाँ भाई हम लोग कंप्लेन लेके आए हुए हैं। हमको सरकार तरफ से तो कोई सहूलत नहीं है और यहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं है। और वोट लेना हो तो हमारी गली गली आ जाते वोट लेने कि भाई हमारा तुम्हारे को क्या तकलीफ है बोलो। सर हमारा फिल्टर पानी लाना पड़ता है बराबर। फिल्टर पानी पूरा दिन में नहाने का भी वही लाने का, पीने का भी वही लाने का, पकाने का भी वही लाने का। अभी गर्मी के अंदर हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? 300 रुपए, एक व्यक्ति 300 रुपए कमाता हो, वो पानी करेगा कि घर में खाना देगा बच्चे को, कि वो हॉस्पिटल के खर्चा निकालेगा? ऐसे पानी के अंदर हमारे बच्चे कुल्ला उल्ला करे पेट में जावे तो मेरे बच्चों को इन्फेक्शन होवे क्या नहीं होवे ने? अभी ऐसा फरियाद हम यहाँ लेके आए तो हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे को सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। देखो इनके ऑफिसों में चोखा चट पानी आता है ना, हमारी सोसाइटी में गंदा पानी आता है। ये तो कोई का इंसाफ है इनका? हमारे को इंसाफ दिला, हमारे को चोखा पानी चाहिए। फरियाद लेके आए, हमारी फरियाद सुनने वाला कोई है नहीं। हम किसको सुनाए? हम ऐसे पानी पी पी के हमारे बच्चे मर जाए, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाने पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? सरकार होगी, हमारी जिम्मेदारी उठा सकती है। हम परेशान हो गए, हम खाने पीना का ऐसे पका के गंदा पानी इस्तेमाल कर करके हमारे बच्चे बीमार हो गए। हम अस्पतालों में रुपये खर्च कर
हम किसको सुनाए? फरियाद सुनाने आते हैं, कोई अधिकारी हमको मिलता ही नहीं है, तो हम किसको जाके सुनाए? हम मजदूरी, हम खाने पेट पे पट्टे बांध के तुम्हारे वेरे भर दे के नहीं, सरकार का वेरा बाकी ना रहे, पानी का वेरा बाकी ना रहे। सरकार को हम टाइम टू टाइम वेरा भरते, लाइट बिल भरते, हम घर में मजदूरी करके खाते नहीं, लेकिन वेरा और पानी का वेरा सब हम रेगुलर टाइम टू टाइम भरते, लाइट बिल टाइम टू टाइम भरते। तो हम सब सरकार की सुविधा, हम कुछ बाकी नहीं रखते, तो हमको सुविधा मिलने की हमको कोई आस नहीं है, हम यूं ही मरे। हमको कोई अच्छा पानी 3 महीने से कंटिन्यू हम ऐसा पानी इस्तेमाल कर करके हमारे बच्चे बीमार हो गए, अस्पतालों में भर्ती हो गए। हम कहाँ जाए? हम किसको शिकायत कर? हम शिकायत लेके, हमारी शिकायत सुनने वाला ही कोई नहीं है, किसको सुनावे हम? तो क्यों ये बड़े अधिकारी हमारी शिकायत सुने? तो तुम आते हो हमारे पास वोट लेने, हम तुमको हमारी समस्या की हमारी कुछ तकलीफ होगी तो ये लोग सुनेंगे, तो हम सब खुद वोट देते हैं। तो हम ऐसे इलाके में रहते कि हमको पानी की सहूलत नहीं मिलती, बराबर है। वापस बड़ौदा शहर का कॉरपोरेशन पानी की समस्या हो, गटर की समस्या हो या कोई भी बेसिक फैसिलिटीज देने में टोटली फेल है। आप देखो अभी गर्मी की सीजन है, पानी आता नहीं है, और आता है तो गंदा पानी आता है, और गंदा पानी आने की कंप्लेन, फरियाद एक सोसाइटी में 5-5 महीनों से पेंडिंग है। लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में इतना आक्रोश है। आज वो लोग अपने घरों से गंदा पानी भर के लाए थे यहाँ पे, और गंदा पानी आप हम लोग भी यहाँ खड़े, हम लोग भी समझ सकते कितना स्मेलिंग हो रहा है। इतना गंदा पानी है कि लोगों के इसमें स्मेलिंग हो रहा है। ये देखिए पानी का कलर, अभी ये इसका स्मेलिंग देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा, इतना गंदा स्मेलिंग है कि हम लोग पानी यूज करने के लायक भी नहीं रख सकते, इतना गंदा स्मेलिंग है। अब ऐसा गंदा स्मेलिंग वाला पानी था, और इस वजह से लोग परेशान थे, और परेशान लोगों ने मटके लेके आए थे गंदे पानी के समस्या और पानी की समस्या को सुलझाने के लिए। तो मटके भी फोड़े और गंदा पानी भी ऑफिस के अंदर डाला है, ताकि अधिकारी जो ऑफिस में बैठे बैठे कोई कामगिरी कार्यवाही करते नहीं है, तो उनको भान आए और कामगिरी जल्द से जल्द शुरू करवाए।